अधिकारों का रक्षक अपना, अधिकारों का रक्षक अपना यह गणतंत्र पर्व है। अधिकारों का रक्षक अपना यह गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है, हम सबको इस पर गर्व है। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं हमारे विद्यालय सेंट जेवियर स्कूल नेवटा के मैनेजर फादर आरोप, प्रधानाचार्य फादर जॉन रवि, उप प्रधानाचार्य फादर जेबा मलाई, प्रशासक फादर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एबिन सर, टीचर कोऑर्डिनेटर जुगल सर एवं मुकेश सर, पधारे हुए अतिथिगण एवं समस्त स्टाफ सदस्य, आप सभी का हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपनी भारत माता को वंदना अर्ज करने के लिए हमारे समक्ष आ रहे हैं। एक प्रार्थना के तौर पर वंदे मातरम हमारे ही विद्यालय के संगीत शिक्षक सुमन सर। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे सभी से अनुरोध है तालियां बजाकर हम उनका स्वागत। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, फादर प्रिंसिपल, उपस्थित गणमान्य जन एवं शिक्षकगण, सभी को मेरा नमस्कार। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब अपने देश के 72वें गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और देश के सुचारू रूप से संचालन के लिए संविधान निर्माण की दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने दुनिया भर के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान ने मूर्त रूप लिया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू Friends, we all know that today we are celebrating our Republic Day. As on this day, that is 26th January 1950, our Constitution came into effect. However, many do not know that even before this date had acquired special significance. Having resolved to attain Poon Swaraj, our people had been celebrating Poon Swaraj Day on every 26th January from 1930 to 1947. That is why in 1950 we embarked our journey as a republic on the 26th January, affirming to the principles laid down in our constitution. Since then, every year we celebrate our Republic Day on 26th January. The modern state comprises of three organs: legislature, executive and judiciary, which are necessarily interlinked and interdependent. Yet, on the ground, the people comprises the state. The word republic signifies the power, which is supreme. We, the people, are the prime movers of the republic. With us, the people of India rest the real power to decide our collective future. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Respected fathers, Father John Ravi, Father Jabba, Father Vincent, respected sisters, brothers, and all the respected dear teachers present here, and all the office and supporting staff. First of all, I would like to wish each one of you a very happy Republic Day. गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं. We are celebrating 72nd Republic Day of our great India, our nation. However, this celebration is an extraordinary one, strange and to some extent even abnormal. In 71 years of India's Republic, for the first time, we are celebrating this day in an incomplete manner because we do not have all the teachers present here and I don't see any students. Indeed, it is incomplete because of many restrictions and limitations. It is the same even in Delhi. The mighty military display and cultural diversity are cut down on this day. All because of one culprit, namely Corona. COVID-19 has taken all of us, our nation and the entire world for a ransom and has altered the history of the humanity. India as a country suffered a lot and continues to suffer in many respects. It will take months more to get back to normalcy, hopefully. In spite of this abnormal situation faced by all of us, life goes on. It is also true that we have learned to adapt to the changing circumstances, to move forward. We are not stuck, we are not deterred by COVID-19. I think we all have behaved in a matured way. And we need to continue until we overcome this problem fully.
हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। A very good morning to all of you. Respected Father Aro, Father Jeba, Father Vincent, Sister Rufina, brothers, other sisters, my dear teachers, and our fellow workers. Nice to see all of you. Class 9 to 12 teachers have been here last week, 6 to 8. I hope soon we will have you back, and nice to be back home. Let me share a couple of reflections. Whenever I reflect on our country, India, several things come into my mind. But today I will focus on two things because it's very pertinent when we talk about 21st century and also in today's context. The first thing is something to be happy about India. Father said many reasons. We have very cultural diversity and variety of things of which we are proud of. Among all these, what makes me proud to be Indian is our Indian Constitution, जो संविधान है भारत का. Morning also I said, if you travel to other countries, they always refer to our Constitution. Beautiful values are enshrined. I hope all of you have read the preamble to the Constitution. And today I can tell you, after having reflected from various perspectives, in spite of our poverty, in spite of our literacy, in spite of our corruption, in spite of our dominant culture of a few, India continues to remain the largest democracy in the world. The binding factor is none other than the Constitution. Take that oath today that we will be the agents of change. We will change ourselves. We will help our leaders, others, our parents and students to change so that we become a. Wish you a happy Republic Day. May our mother country enable us, empower us to move forward as responsible citizens of the India and of the world. God bless you. Thank you. आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभ